and gentlemen, every great launch begins with a great vision. And behind every vision is a mind that dares to think differently. A leader who sees opportunities where others see challenges. Now, to share the story, purpose, and future roadmap of Oxbit Technologies, it is my privilege to invite the founder of Oxbit Technologies himself. Please put your hands together as I invite Mr. Arsalan Ahmed, founder of Oxbit Technologies, to share his visions with us. Mr. Arsalan, the stage is yours. Assalamu alaikum. It's kind of an emotional moment for me, to be honest. तारीफ उस ज़ात की जिसने ये जहाँ बनाया. ऑक्सबेट का लॉन्च was planned for quite a while. आज थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले we lost our father. And I'm sure he must have been really, really proud of the day. अपना तारुफ करवाता चलूँ, मेरा नाम अरसलान अहमद पोपटिया है और बहुत खुश हूँ आज काफ़ी सारे पुराने फेमिलियर फेसेस को देख के. मेरे मेंटर्स सलमान, वकास, आसिफ और हमारे पीर अब्दुल कादिर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का. जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं सलमान का छोटा भाई हूँ. एंड इट हैज़ बीन एन इमेंस प्लेजर to having had the opportunity of creating something and having had the chance to work with him, inshallah. अपना अगर थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ कि who is Arsalan Ahmed? I am a consultant, a cybersecurity and technology risk professional, having had the pleasure of working with 3 of the big fours. तकरीबन 14 साल प्रोफेशन में गुजारने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि अपना काम किया जाए और S2 का जो सर्विसेज का टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का पोर्टफोलियो है उसका एक एक्सटेंडेड आर्म बनाया जाए जो कि सर्विसेज पे फोकस करेगा. सो दैट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑक्सबिट टेक्नोलॉजीज़. ऑक्सबिट है क्या? अगर इसको सादा अल्फाज में कहूँ तो एक टेक्नोलॉजी रिस्क और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी है. हमारा इंटेंट क्या है? जो नॉलेज हमने गैदर की है पिछले कई सालों में within the tech risk and cyber security domains, locally and internationally, उसको इस्तेमाल किया जाए और हमारे क्लाइंटेल के लिए सर्व किया जाए. और इस सब के साथ साथ एक मेरा पर्सनल और इमोशनल एंगल भी अटैच्ड है ऑक्सबर्ट के साथ, जो कि मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन पे काम किया जाए जहाँ हम ना सिर्फ लोकल बट इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी टैलेंट को प्रिपेयर करेंगे इंशाअल्लाह. ऑक्सबर्ट का पर्पज़, it's more of an intent to join the capable minds that are in the market at the moment. हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह मिलकर काम करें और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को एलिवेट करें फर्दर. अगर थोड़ा सा बात की जाए ऑक्सबिट के सर्विसेज पोर्टफोलियो की, सो जो हमने विजन अपना डिसाइड किया है वो ये कि वी गोना कीप थिंग्स रियली सिंपल and we're going to bring innovation alongside S2 जो कि माशाल्लाह पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे. उनका एक एक्सटेंडेड आर्म बन के सर्विसेज को इनेबल किया जाए. हमारा मिशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा लैंडस्केप है इसको एलिवेट किया जाए मिलके कोलैबोरेशन के साथ. अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ऑक्सबिट टेक्नोलॉजीज़ का जो पोर्टफोलियो है वो 4 मेजर स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है जिस पे हम क्विकली बात करेंगे. सो पहला हमारा सेगमेंट है दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स, जिसमें हम जिन सर्विसेज पे फोकस कर रहे होंगे वो है इंटरनेट कंट्रोल्स, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में यूजर्स के एक्सेस को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिस्टम्स के चेंजेस को मैनेज करते हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उनकी इवैल्यूएशन एंड अपलिफ्टिंग पे काम किया जाएगा इंशाअल्लाह. साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ पे इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे, जहाँ पे फ्रॉम द यूजुअल VAPT एक्टिविटीज़, रेड टीमिंग्स, कॉन्फिग रिव्यूज़ के साथ साथ आवर इंटेंट इज़ टू ब्रिंग इन सॉल्यूशंस दैट विल फर्दर enable the organizations to elevate their cybersecurity posture. Business processes, again, this is something which may not be directly relevant to the audience here, but
میرے سروسز پورٹفولیو سے کافی کلوز ہے, جہاں آرگنائزیشن کے نہ صرف سائبر سیکیورٹی بٹ جو ان کا کور بزنس ہے ان کی کنٹرولز کی ایلیویشن پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ. سروس آرگنائزیشنز ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ پچھلے 7 سے 8 سال میرا کافی فوکس رہا ہے, اسپیشلی ود دی ایڈوینٹ آف کلاؤڈ, جہاں پہ کافی ساری سروسز ایک سروس پرووائڈر کے پاس ہوسٹ کی جاتی ہیں. آرگنائزیشنز کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو کیسے ایویلیویٹ کریں, اینڈ دس از ویئر آکسبیٹ کمز ان. Last but not the least is targeted towards the chiefs of audit, where Oxbit will form an extended arm and provide services to not only design but operationalize their IT audit functions. The second segment is governance, risk, and compliance. Now, there are a lot of service providers when it comes to GRC. But what we're doing is, again, we're keeping things really, really simple while bringing in innovation. Hamara GRC ka jo portfolio hai, that is predominantly focused on internal controls, starting from designing those to operationalizing those to maintaining those. The second section of GRC is managing projects, where the outside parties, technical evaluators, they come in and engage with your internal teams. Oxbit forms an intermediary to assist in better conducting those assessments. And last but not the least is risk management itself, جہاں پہ ہم automation اور electrification of governance, risk and compliance کی بات کریں گے, جہاں پہ tools کو آن بورڈ کیا جائے اور AI بیس کام کیا جائے گا انشاءاللہ. So Oxbit's GRC capabilities ensure that your organization builds a culture of accountability, resilience, and continuous improvement. The third segment of our services is learning and development. Again, this is something I've been doing for the last 7 to 8 years while I was with KPMG Middle East. Learning and development is something I have enjoyed personally, and the way we have brought it in is we have 3 segments of learning and development. First one, جہاں پہ ہم فوکس کر رہے ہوں گے اسٹینڈرڈس اور فریم ورکس پہ. فار ایگزامپل ISO 27001 ہو گیا, NIST ہو گیا, CIS بینچ مارکس ہو گئے. The second will be on the technology and audit risk fundamentals, and the third one will be if an organizations need a specific help with a specific agenda, we can design and provide learning and development facilities. Right, so our trainings are designed to be practical, interactive, and real world focused. So these are not going to be your standard off-the-shelf trainings, but rather something an auditor or a risk professional has prepared based on your requirements. اور جو لاسٹ سیگمنٹ ہے ہماری سروسز کا, جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف کے وقت بتایا کہ ایک ایموشنل اینگل جو آکسبٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ ہے اپرچونیٹیز کریشن. دی انٹینٹ وی ہیو از ٹو enable resident engineers, جو کہ اگین S2 کا ایک پورٹفولیو ہے جہاں پہ یہ لوگ ٹولس پہ کام کرتے ہیں. ٹولس کی یوٹیلائزیشن آن دا ریسیونگ اینڈ ایٹ ٹائمس بیکمس ڈیفیکلٹ, اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ آکسبٹ از وی انشاءاللہ انٹینڈ ٹو work on preparing resident engineers that can further enable our clients. The second is hybrid resourcing, where we will enable our services to be onboarded as needed. And inshallah, another extended arm of resourcing will be, enabling the talent to go further within the Middle East, globally, and find opportunities, inshallah. So, Oxbit resourcing is supposed to be a single window solution, where, be it from GRC professionals to cybersecurity experts to your, cybersecurity professionals. That is what we intend to work on, inshallah. اپنا پیس میں ایک پرسنل میسج سے کلوز کروں گا کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف میرا بڑا بھائی ہے, but has been my mentor for ever since. And after Baba's retirement, he is the one who, kind of اپنے جوانی کے دن انہوں نے وقف کیے ہماری ایجوکیشن اور ہماری کیریئر پہ. تو سلمان بھائی, it is an absolute pleasure, and inshallah I look forward to the coming days. Thank you.